Good evening students, welcome to the session. In this session we will discuss series and parallel combination, and I hope you will definitely like this video because this video will be very useful to you. I feel that, and after watching complete video you will also feel the same. So if you have any queries you can contact me on this number, and this is the first lecture of second unit. So some you are thinking about some earlier topics, that some earlier topics are not covered, but we will cover that in lecture. But series and parallel combination in this video I will discuss, and that will start from very basic to very high level. So you can say from the very basic to very high level we will go. So students, we will start with the series combination. So in the series combination in 10th class you have also studied about it, so you have some idea about it. So that idea you have to use it. So here students, I am taking one series combination. Let's suppose I will use various colors so that you can understand easily. I am using one resistance here, and then again one resistance here, and connecting them to a battery. Here is, I have connected a battery and the two resistance. Let's suppose its value is R1, the value of second resistance is R2. Now students, how you can understand these are in series? Basically you have to see that the one part of this resistance, one end of this resistance must be connected with the another end. Like one end of R1 is connected to another end of R2, one end of R2 you can say. So students, this is the one method to understand. The second method is when the resistance are in series, how you can elaborate or how you can understand. Basically you have to consider the current. Suppose current I is flowing from the battery, I is coming from the battery. Then basically if current is through the both the resistance, like here I current will flow, in the same way this current will pass through this portion, and same current I will flow through the resistance R2. So basically when the student's current is not divided, current is same, in that case we assume that the resistances are in series combination. Like I will draw one more series circuit. Let's suppose this is resistance R1. I will solve this question also, and now we will see the derivation of series combination of resistance, that is using Ohm's law. So we will see that derivation also here. So it is, let's suppose resistance R3. Now let's suppose this is the battery, positive terminal and negative terminal. Now we have to connect it to other end so that circuit gets completed. Students, many questions from this type of concept you will see in your board exams or CBSE exams. So here we are going to prove the equation. So you can see okay, I have to take the marker. I have to take derivation here. So this value is, let's suppose 2 ohm, it is 4 ohm, and it is let's suppose 6 ohm, and the battery that I connected here is of 36 volt. So students, what I have to do here,
I am considering it as positive terminal, this one as negative terminal. So students, you can see here that the current, if current I is coming from the battery, then same current will flow through this resistance, same current will flow through this resistance, and same current will flow through this resistance. First of all, we are also discussing the series combination derivation. So I am also covering that derivation here. After that, we will see about the question. So for the derivation, I am using this one marker so that we can erase it after some time. So students, let's suppose, okay, marker is selected. Let's suppose this one is R1 and this is R2 and this one is R3. So I have taken 3 resistors and this battery as V. Students, as we know, Ohm's law states that V is directly proportional to R. V is directly proportional to I. This is Ohm's law, and when we equate it, then it comes out to be V equal to I into R. So I am assuming here, I am assuming that this circuit comes out to be like this one resistance and a battery here. Why I am assuming it? I am assuming it RS, which is the series combination resistance, and this is voltage V. So current is same, that means voltage is divided here. That means if current is same, here V1 voltage will drop. On this R2 resistance, voltage is divided V2, and in R3 V3 is there. So students, we have to assume that this V is equal to V1 plus V2 plus V3. After this, so students, if 36 volt is there, then some voltage drops here into ohm resistance, some voltage will drop across 4 ohm resistance, and some voltage will drop across 6 ohm resistance. That means voltage is divided when we have series combination, but current will not be divided. So you have to remember, whenever series combination is there, what is divided? Voltage is divided, current will be not divided. So making it easy, so V is equal to, I am assuming V is equal to, now this V equal to, I am writing here, okay, I am writing in the upper right here corner. So this is V, we can write it as I into R S, where I is the total current, or I is the current, I into RS is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. Because current is same, that's why we are taking it so that we can cancel the current. So here we will write I into R3. I hope this right corner is visible. So I will cancel on both sides, that means I will cancel on both sides, and we are left with the relation RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So students, whenever there is a series combination, the equivalent resistance comes out to be this relation RS equal to R1 plus R2 plus R3. That means during the
series combination there is simple addition of resistance. Now we will see the solution. So this is the derivation part. What concept is used here? The concept used is current is same in the series combination. Which physical quantity is divided? The voltage of the battery is divided in various voltages during the series combination. Now I am erasing it. So I have raised it. Now we are going to the solve the question. We are going to solve the question. So students, here we will now I will again use the pencil so that we can stay with the okay. So students, you can see here. Is it okay? Yes. So you can see here this 2 ohm, this 4 ohm, and this 6 ohm. They will be simply added, and the circuit obtained is this one. 6 plus 4 plus 2, that means the equivalent resistance will be, here we have connected a battery and this is equivalent resistance. It will be 12 ohm. 6 plus 4 plus 2, it will be 12 ohm. So that means this is 36 volt. Now we have to find the current. Students, current will be V is equal to I into R. So V is equal to I into R. To find the current, I will divide voltage by R. So RS you can say here, series resistance. So I comes out to be 36 by 12. 36 by 12. That means current is 3 ampere. So after cancellation, current will be 3 ampere. 3 ampere current will be there. But this is the one part. Suppose he has also asked about the voltage drop across this 2 ohm resistance. So V1 is equal to I into R1. So 3 into 2, 6 volt will drop here. You can clearly see I am writing here. Across the 4 ohm resistance, how much voltage will drop? 4 into 3, 12. 12 volt will drop here. And the rest of the voltage is dropping across 6 ohm. That means 12 plus 6, 18. So 18 volt drop across this 6 ohm. You can calculate it using V is equal to IR also. And you can simply calculate it from the battery voltage, because rest of the voltage will appear here. So 6 plus 12, 6, 18, 18 plus 18, 16, that is the battery voltage. So whole the battery voltage is divided when we have a series combination. When we have parallel combination, then what will happen? We will see it in a few minutes. So if this video is useful to you, then you can like and share this video. And we have discussed about the series combination. The concept is that the current will be same in the series combination if current is same through two resistors that are in series, and the one end of resistance is connected with the other end of resistance. So suppose this is first end and this is second end, and then R1's first end. So second end of resistance 1 is connected with the first end. When first end is connected with first end, then that will be the parallel combination. I will show you parallel combination now. After that we will solve some questions. So students, now I am moving downward. Now I am going to parallel combination. So in the parallel combination, you can see if this is a resistance 1, okay. So it's the first end, it is its second end, and we have another resistance, this one. Okay, let me change the color. This resistance, that is, and this is its first end and its second end. Students, if this second end is connected with first end, then we say the resistance are in series combination. Either they are upward or downward. Suppose I connect here a battery. Suppose I connect here a battery to this end, like this, positive and negative.
then this one. So it will look like a parallel combination, but you can see current is flowing from here and current will flow from here, then current will flow from here to here. That means current is not divided anywhere. When the current is not divided anywhere, then in that case you will assume that it has a series combination. So what I want to tell you that when the two ends are joined like this one and like this one, when the two ends are joined, then the circuit is said to be in parallel combination. This is the my concept. So now you can see, if I connect a battery from here, positive and negative terminal, then the current will be divided. Like let's suppose I current is flowing from this end, I current is coming from battery. At this point, the current will be divided into two parts. One part will flow here, that is, let's suppose I1, and the rest of the current will flow here, I2. Suppose I current is 5, 2 ampere will flow here and 3 ampere will flow in I2. So that means when the two resistance have different currents, और यू कैन से सेम करंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स, दो रेजिस्टेंस हो उनमें सेम करंट भी हो सकता है, उनमें डिफरेंट करंट भी हो सकता है, करंट की वैल्यू डिफरेंट और सेम हो सकती है, बट व्हेन द करंट इज डिवाइडेड इन द सर्किट like this, current is divided in this branch, then these two resistance are in parallel combination. जहाँ भी करंट डिवाइड हो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो, दैट कम्बिनेशन इज पैरेलल कम्बिनेशन. करंट डिवाइड होने के बाद इक्वली भी डिवाइड हो सकता है, लाइक 2 एम्पियर विल बी डिवाइडेड इनटू 1 एंड 1 एम्पियर. ऐसा भी हो सकता है 2 एम्पियर डिवाइड हो जाए 1.5 एंड 0.5 में. तो ये ज़रूरी नहीं है कि करंट इक्वली डिवाइड हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर करंट डिवाइड होता है, इन दैट केस द सर्किट इज पैरेलल सर्किट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, in the parallel circuit the current is different but the voltage is same. Students, why you have to understand that यहाँ पे जो voltage drop होगी on this end, voltage drop will be V1, उतनी ही voltage इस सर्किट के क्रॉस ड्रॉप होगी V2. V1 will be equal to V2. एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जिस तरह से पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इन द सेम वे वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन. सो नाउ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो this end, let's suppose one resistance is connected here, then we have to connect another resistance here. Okay, wait for 1 minute. Wait for 1 minute, students, so that this circuit seems good for you. Okay, so these are the two resistance and I have to connect battery now. So I am taking this as battery and now I have to connect here. So let's change the color so that you can better understanding. 2 ohm and this is also 2 ohm and the battery is 110 volt. Students, so we have to see the derivation part also. So before solving it we have to move to the derivation part. So let's suppose now I will use marker from screen recorder so that we can erase it after some time. So now I am taking the marker from the screen recorder. Okay, just wait for 1 minute. Okay, so let's suppose this resistance has well R1 and this is R2. Students, when we take two resistance different,
then current through in parallel, then current will be different. So that means voltage across here is equal to voltage across this one. So that means V1 equal to V2. Okay, so you can simply, first of all you have to make a circuit here. So I am drawing a circuit. Let's suppose this give me a circuit where this is the, okay, wait, where this is the circuit, this is the equivalent resistance, and this is the voltage V. So this is Rp. So students, as the voltage is same and current is divided, let's suppose I current is coming from here and this is divided into two parts. Let's assume this part is I1 and this part is I2. Then students, total current is equal to I. This is, let's suppose, IT. So students, you can see here IT is equal to, so IT is equal to I1 plus I2. I am explaining it in detail. You can forward the video with the 1.5x speed so that this will cover in few quick time. So can I write IT equal to V by Rp? Because if I have to find the total current, this current IT, then I can simply divide V with R. Okay, so wait for 1 minute. This value. So total current is equal to total current on the left hand side. We can write this total current as this total current. We can write it as okay. So we can write it as IT equal to V by Rp. This you have already covered in 10th class, but I am explaining so some of the students will understand. Then I1 is equal to V, because voltage is same. The battery is giving 10 volt, then this will be 10 volt, this will be also 10 volt. So voltage in parallel combination is same. That means if two resistances are connected in parallel, then I have to connect it to battery, then same voltage of battery will appear across the two resistances. So its value is V by R1 plus V by R2. That means VB will cancel out and I get the relation 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So now I am raising it. I hope you have seen the derivation part and you can see it. You can search on the internet what will happen in the parallel case. So now I am going to this question. Suppose IT is the total current and I have to find the current here, I1 and I2. So students, I have connected these two in parallel. That means its resultant will be 1 by Rp is equal to 1 by 2 plus 1 by 2. If I solve it by taking LCM, then Rp comes out to be 1. That means parallel, if I draw a circuit from it like this one, this is a parallel combination, resultant of parallel combination, and this is the battery, then it will give me 1 ohm resistance with
10 volt battery. That means the IT will be equal to 10 by 1. So total current is equal to 10 ampere. First thing. Now students, from here you can see these two are resistances. No other resistance is connected. That means whole the voltage 10 volt will appear across this resistance, and the same voltage will appear across this resistance. Simply you can say, to appear here 10 voltages. One thing another you can remember, you have to remember, जब भी students ये दो resistance same हो, whenever these two resistances are of same values, or you can say if whenever three resistances have same value, then the current divides equally. तो करंट इक्वली डिवाइड होता है. लाइक हेयर टू रेजिस्टेंस यू कैन सी 2 ohm 2 ohm. So current of 10 ampere will be divided into two equal parts. That means 5 ampere will flow in the upper branch. Here I am writing. So 5 ampere will flow here, and 5 ampere will flow from the lower branch. So that voltage drop is equal to V is equal to I into R. So 5 into 10 2 is equal to 10 ohm. So students, you can simply understand this question in this way also. तो बहुत से मेथड हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के. नाउ आई एम टेकिंग यू टू वन क्वेश्चन दैट विल कंटेन सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगर किसी को क्लियर ना हो, सो यू कैन आस्क मी. नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू another question where we have a series and well as parallel combination. So here is the series combination, here we have parallel combination. So this is parallel combination. Just wait for 1 minute students, I will draw the diagram, then we will discuss. So this is the complete diagram. Now I am taking one simple question. This is 2 ohm, because after this you will get the concept. This is 4 ohm, and this is again denominator near down resistance 4 ohm, and the battery voltage is 8 volt. So students, if I draw a circuit from it, you can see one resistance in series and one resistance of this parallel combination. This 4 and 4 will make 2 ohm. So simply I can draw this circuit from this one. This is 2 ohm, that is you can say this first resistance, and then I have 4 and 4 in parallel, so it will also give me 2 ohm. You can check 1 by 4, 1 by 4, so 2 to 4, and this voltage is 8 volt. So this is a easy one question. You can now take it, you can redraw it, and after redrawing, its answer will be like this one. This is the final resistance, and it comes out to be 2 plus 2 4 ohm, and a battery that is of 8 volt. I will take you to some difficult questions also, but firstly you have to clear from basics. Now your IT will be 8 by 4, that will be 2 ampere. So you can use Ohm's law here. So that means 8 volt will appear, 2 ampere will come from 8 volt battery. So if he will ask about the voltage drop across this resistance, then you will simply say V is equal to I into R. So voltage drop here will be 2 into 2, 4 volt. The total voltage of battery is 8 volt. That means if 4 volt is dropped here, then these two resistances have the same voltage because they are connected in parallel, and they have voltage drop of 4 volt, because 4 volt is already divided, rest is 4 volt. So जो remaining है वो कहाँ पे appear होगी? In this parallel combination. That means here 4 volt will come. How 4 volt will come? If current of 1 ampere will flow here, and in the same case current of 1 ampere will flow here. And students, you can say
सी इफ जिस तरह से मैंने बताया था आपको, इफ़ टू रेजिस्टेंसेज आर सेम then the current is divided equally. So 2 ampere current is coming here to this point. Then after this point 1 ampere will go in the upper branch and 1 ampere will come in the down branch. So 1 ampere current will flow in both the 4 ohm resistances and 2 ampere will flow through the 2 ohm resistance. स्टूडेंट यहाँ तक जो वीडियो है इसमें जो भी हमने किया है उसमें सिंपल हमने एक सेम रेजिस्टेंस लिए हैं, लाइक 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि करंट इक्वली डिवाइड हो. लेकिन अभी मैं जो कुछ क्वेश्चंस लूँगा इन विच आई विल टेक सम क्वेश्चंस इन विच द करंट विल बी नॉट डिवाइडेड इक्वली. तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है दिस वन, लाइक दिस इज द रेजिस्टेंस एंड देन आई हैव टू रेजिस्टेंसेस विच आर नॉट इक्वल. दिस इज़ इसके बहुत मेथड है करने को, तो मैं आपको एक मेथड आज बताऊंगा. एक मेथड शॉर्टकट भी है लेकिन वो आपको समझ जब ये मेथड आ जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. सो हेयर आई हैव टेकन अ डायग्राम एंड बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी करंट फ्लो होगा. तो बैटरी इज़ देयर. तो स्टूडेंट्स जल्दी से सर्किट कंप्लीट हो जाए हमारा, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स टेक दिस वैल्यू इज़ ओके 4 and 5. Let's take it as 8. Wait for 1 minute. I will take it as 10 and I will take it as 40. So 10 ohm, 40 ohm and 2 ohm. Then this battery, let's suppose battery is of 30 volt. Wait for 1 minute. Let's suppose this battery is of 30 volt. Students, what do you have to find? You have to find the current flowing through this 2 ohm resistance, current flowing through 10 ohm resistance, current flowing through 40 ohm resistance, and the voltage drop across 2 ohm resistance, voltage drop across 10 ohm, and voltage drop across 40 ohm resistance. So it is another good question. Now we are going to solve it. So students, basically first of all you have to combine this one 10 and 40. These are in parallel combination, so you cannot simply add it. You have to add it by using this formula 1 by Rp equal to 1 by 10 plus, okay, I will use screen recorder's marker so that we can do it quickly. So 1 by, okay, wait for 1. Okay, so 1 by 10 plus 1 by 40. So 1 by 10 plus 1 by 40 is equal to, you can take the LCM here, 40 will come and in the numerator term 10 4 is the 40, so 4 plus 1 will come here. That means its value comes out to be 1 by 8. But you have to reciprocal it. You have to take the reciprocal because on the left hand side we have 1 by Rp. So what we have to do now, you will get this from these, combining these two you will get the value that is 8 ohm. So now I am raising it. You can draw a circuit where this 2 ohm resistance will be as it is, then one resistance that we get from the parallel combination, and here we have the battery. This terminal will be bigger and negative terminal will be smaller, so take care of that. So this is 2, this is 8 now, and the battery is 30. Now this 8 and this 2 is in series combination. You can simply add it. 8 plus 2 is 10. After that you will get the value of current, and your current comes out to be 30 by 8 plus 2 10. That means your current will be, total current will be 3 ampere.
30/10. So students, you can see 3 ampere is clear. Then you can proceed in this question. So total current that is coming from the battery is 3 ampere. So some voltage is dropped here. Some voltage is dropped here, and that voltage is denoted by, let's suppose, V1, that is across the 2 ohm. So current is 3 ampere. 3 into 2, V is equal to I into R, V1 equal to I1 into R1. So this comes out to be 6 volt. 3 to the 6. So 6 वोल्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉप हो गई है वोल्टेज. 6 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है. डैट मीन्स बैटरी की वोल्टेज 30 थी, तो 30 में से 6 यहाँ पे ड्रॉप हो गई. बाकी कितनी बची स्टूडेंट्स? द रिमेनिंग वोल्टेज इज 24. दैट मीन्स 24 वोल्ट विल अपीयर इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब 24 यहाँ पे होगी, 24 ही यहाँ पे होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो वैल्यू ऑफ I1 will be 3 ampere. Now I am solving it for I2. Let's suppose this value is I2 current. Here voltage drop is 24. That means I2 will be equal to, I2 is equal to, so I2 is equal to voltage, that is 24, by the resistance is 10. That means 2.4. So I2 is equal to 2.4. स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू हो जाएगी 2.4, एंड टोटल करंट कितना था स्टूडेंट? 3 एम्पियर. दैट मीन्स 0.6 वैल्यू हो जाएगी I3 की. इसको भी चेक कर लेते हैं. चेक करने में हमें कोई हर्ज नहीं है. चेक करने हर स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को चेक किया करो. I3 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ I3 विल बी, वोल्टेज सेम होगी ड्रॉप, 24 डिवाइडेड बाय 40. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, करके देखना. 24 5 40. सो इसका आंसर आएगा 0.6. तो 0.6 वोल्ट एम्पियर यहाँ पे और 2.4 यहाँ पे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल करंट दैट वाज 3 एम्पियर. तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज CBSE एज वेल एज NCERT क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन तक मुझे आपको लेके आना था, इसलिए मैं इस वीडियो को प्रोसीड कर रहा था. ऑलमोस्ट वीडियो की 37 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है. एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम फिर कुछ और देखेंगे अगली वीडियो के लिए. सो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो अच्छे रहोगे. और एक चीज़ याद रखना, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ पे करंट कम फ्लो होगा. इसका भी एक लॉजिक बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में बिल्कुल नहीं. इस वीडियो में कंसेप्ट के ऊपर जाना है हमें. सो नाउ आई एम क्लियरिंग इट. सारा बोर्ड क्लियर कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लेना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं. और तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लें एक क्वेश्चन लेकर. ओके, मार्कर भी क्लोज करते हैं, पेंट में बनाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अच्छी विजिबिलिटी रहेगी उसकी, क्योंकि जो हम मार्कर से क्वेश्चन बनाते हैं उसकी विजिबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है. तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, this is also another resistance. Now I have to take 3 more resistance. बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट्स एक, ताकि आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर हों, क्योंकि कंसेप्ट के लिए ही आप यहाँ पे जुड़े हुए हो. अदरवाइज़ यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग समझा रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप दोबारा चैनल के ऊपर आते हो. तो अगर वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट्स तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन. बैटरी, बैटरी एंड अगेन वन रेजिस्टेंस इज देयर. तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा क्वेश्चन बने, इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आए हैं. थोड़ा सा मैं रिपीट लूँगा इस क्वेश्चन में, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था क्वेश्चन. सो आई एम टेकिंग दिस वैल्यू एज 10, दिस वैल्यू एज 40, ताकि मुझे जल्दी से 8 मिल जाए. लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज़ 2, दिस वैल्यू इज़ 4,
एंड दिस वैल्यू इज़ थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं ले रहा हूँ वैल्यू, सो 2 + 4। तो थोड़ा सा 1 मिनट कैलकुलेशन कर लें स्टूडेंट्स। So students, I am taking this value as 12 and this value as 1 ohm and this value is as 20.4। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू ली है ताकि थोड़ा सा आपको इजी लगे क्वेश्चन। सो आई एम टेकिंग इट एज 20.4। तो आई थिंक क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया है। पहले फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड टोटल करंट, देन करंट थ्रू दिस 10 ohm, करंट थ्रू दिस 40 ohm, करंट थ्रू दिस 2 ohm, करंट थ्रू 4 ohm, करंट थ्रू 12 ohm। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा करना है। सो जल्दी से मैं एक सोल्यूशन इसका करके आपको बताता हूँ ताकि आप थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। आई होप मार्कर इज अवेलेबल, यस, so marker is available with me। So students, you can see this 10 and 40 are in parallel combination। सो इनको मिला के कितना बनेगा 8। पिछले क्वेश्चन में करके हटे हैं, करके देखना है तो दोबारा से कर सकते हैं। 1/10 + 1/40 करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे मैं टाइम नहीं खराब कर रहा, ये हम अभी करके हटे हैं, थोड़ा पीछे जाके देख लेना। ऑन ज्वाइनिंग दीज 3 इन पैरेलल वी विल गेट 1/2 + 1/4 + 1/12। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि ये अभी हमने नहीं किया। सो कैन आई टेक इट्स एलसीएम एज 12। सो मैंने इसका एलसीएम लिया 12। इन द न्यूमिनेटर आई विल गेट 2 6 द 12, 6 विल कम हेयर, 4 3 द 12, 3 विल कम हेयर एंड 12 1 द 12। So 6 + 3 + 1 10। So 10/12 will be the answer, but I have to take reciprocally of it, so its answer will be 12/10। तो सीधी सी बात आई कि इन तीनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई 1.2। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास कितनी वैल्यू आई 8, और एक मेरे पास 1 ओम का आके कनेक्टेड है। So these are simply added, 8 + 1.2 that will be 9.2, 9 + 1 is equal to 10.2। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा 20.4 वैल्यू इसीलिए ली थी, सो दैट वी कैन गेट द इजी आंसर। तो 20.4 को 10.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास IT की वैल्यू आ जाएगी। सो टोटल करंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2 एम्पियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। टोटल करंट कम्स आउट टू बी, IT कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर कर लेना, आगे क्लियर मेरा काम है। सो 2 एम्पियर विल बी हेयर, नोट कर लेना स्टूडेंट्स, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी टोटल करंट वाज 2 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे करंट आया और इसकी रेजिस्टेंस कितनी बनी थी 8, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ना। तो 8 × 2 कर दो, 8 × 2 दैट मीन्स 16 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगी वोल्टेज। 8 × 2 16 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आएगी 16/10। चेक करते रहना स्टूडेंट्स, 16/10। मैं इरेज 1 मिनट। यहाँ पे I1 10 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 16, करंट की वैल्यू कितनी आएगी 16/10। वैल्यू कितनी आ गई 1.6। बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप 16 वोल्ट, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज आई वही ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे वैल्यू आई 16/40। हर कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर करके चलोगे तो अच्छे रहोगे। सो 16/40 योर वैल्यू विल बी 0.4। 0.4 दोनों को ऐड कर दो, 1.6 + 0.4 कितना बना टोटल करंट, दैट वाज 2 एम्पियर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, अभी मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ओके, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब इसको मिला के स्टूडेंट कितनी बनी वोल्टेज
इसको मिला के यानी हमारी रेजिस्टेंस 1.2। टोटल करंट कितना था 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी 1.2 इंटू 2, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी यहाँ पे 2.4। तो 2.4 वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड हेयर। सो जल्दी से चेक कर लें कितनी कितनी वैल्यू आएगी इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके वेट वेट वेट, द रेजिस्टेंस हैविंग 2 ओम, इसके थ्रू वैल्यू आएगी हमारी, वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स 2.4 डिवाइड बाय 2। पहला करंट हमारा आ गया, द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस इज 1.2। इन तीनों को ऐड करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि ये 2 ओम बनेंगे। तो कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, कुछ नहीं है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड वीडियो है बिल्कुल। 4 ओम 2.4 वोल्टेज, I इज इक्वल टू V/R, तो 2.4 बाय 4 वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, डिवाइड करके देखोगे वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.6। चेक कर लेना कोई ऐसा ना किसी को हो कि हाँ कंसेप्ट में गड़बड़ है। वोल्टेज 2.4, रेजिस्टेंस 12, तो करंट कितना आ गया स्टूडेंट्स 0.2। तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू, तो तीनों वैल्यूज़ दिस वन एंड दिस वन यू कैन सी इन फिगर, दिस वन, ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो। यहाँ पे आया 1.2, यहाँ पे आया 0.6, यहाँ पे आया 0.2, तीनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा टोटल 2 एम्पियर। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स। नाउ इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी स्टूडेंट्स, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगी, 2 इंटू 1 2 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे वोल्टेजेस लिख रहा हूँ, और इन दिस सर्किट कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई स्टूडेंट्स 16 वोल्ट। 16 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुई। इन दिस सर्किट कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई 2.4। इन दिस सर्किट 2.2 वोल्ट। तो तीनों सभी को ऐड करेंगे, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 0.4। तो स्टूडेंट्स टोटल वोल्टेज यू कैन सी बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू, बैटरी वोल्टेज किस तरह से डिवाइड हुई वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग गया। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको समझ आ जाए। एक लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क पर्पस करना है स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आपने नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे भेज देना, शाम तक भेज देना जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, दिस इज़ द रेजिस्टेंस, दिस इज़ अनदर रेजिस्टेंस। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं डाल रहा मैं। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। तो this is another resistance and now these all are connected to battery। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि करना ज़रूर इसको एक बार, बिकॉज आई हैव टू चेक योर कंसेप्ट। ओके चलो एक काम करना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेना, थोड़ा सा तो लॉजिक हो क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया था पहले। सो नाउ कनेक्ट आर रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ओके अब स्टूडेंट्स अब ठीक है, इसका 2 ओम वैल्यू, दिस इज़ 4 ओम, this is 4 ohm, this is 8 ohm and this is 1 ohm. Battery is of 10 volt. You have to tell me the total current, this current IT, then the current flowing through 4 ohm resistance, current flowing through 2 ohm resistance, current flowing through this 8 ohm resistance, current flowing through this 4 ohm resistance, and the total current flowing through 1 ohm resistance. After this you have to tell me the voltage drop across this one 4 ohm, voltage drop across 2 ohm, voltage drop on across each of the resistance। तो इस क्वेश्चन का होमवर्क स्टूडेंट्स आप अज्यूम कीजिएगा एंड ट्राई जरूर कीजिएगा, एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू then please like and share this video, and thank you so much for joining the session,
एंड आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। काफ़ी क्वेश्चंस किए, काफ़ी, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं थी आज, बिल्कुल बेसिक से चले हैं। एंड वी विल सी सम शॉर्टकट ट्रिक्स सून। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।